Ma'am, my name is Shalvinder, National Anthem. Thank you, ma'am. Greetings everyone. India is the cradle of the human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of the legends and the great-grandmother of tradition. Our most valuable and most artistic materials in the history of man are treasured up only in India. Today, on the occasion of Independence Day, where each bud blooms in its true colors, where every day is a celebration of unity, harmony and synthesis. Not just today, but let's never forget the sacrifice our freedom fighters did so we could breathe every day with a sense of freedom. Let us celebrate and enjoy the freedom to live independently in our country by remembering our national heroes who gave us the freedom after suffering pain and humiliation. One individual may die for an idea, but that idea will after his death incarnate itself in 1,000 lives, said by Subhash Chandra Bose has come true today. Freedom came to us as a gift of our ancestors. Let us pay respect and value this precious present so that we may never lose it. On this day, we remember the years past. We honor this very day for our flag, old glory has lost. On this Independence Day, 2 centuries ago, we declared independence for justice and liberty. Let us celebrate with joy and honesty by having freedom in the mind, faith in the words, and pride in our souls. Let us salute the nation on this Independence Day. Jai Hind. Namaste. I am B. Daneshwari, 5th B. Kendra Vidyalaya, Virudhunagar. I am going to sing one poem about Independence Day. We gather round to celebrate on a Independence Day. We gather round to celebrate on a Independence Day. Pay homage to our country as the children run and play. Pay homage to our country as the children run and play. With barbecues and picnics and the fireworks in the air. With barbecues and picnics and the fireworks in the air. The flag we own is proudly flown to show how much we care. The flag we own is proudly flown to show how much we care. Happy Independence Day. Happy Independence Day. Happy Independence Day. Jai Hind. Bharat Mata ki Jai. Bharat Mata ki Jai. Bharat Mata ki Jai. Thank you. नमस्ते सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुलें हैं सिकी ये गुलसितान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान
sing a song. Akashaganga. Akashaganga. Surya Chandra Tara. Sandhya Usha. Koi Nante. Koni Bhumi. Koni Nadi. Koni Sagar Tara. वेद केवल शब्द हमारा ने तुम्हारा आकाश गंगा सूर्य चंद्र तारा संध्या उषा कोई जानते ये जहां से ये जरुदन ये निराशा ये मानव उन्नी पण भिन्न भाषा आकाश गंगा सूर्य चंद्र तारा संध्या उषा कोई नानते मेघदन अंदर ना होय कदी जंगे सुंदरता काज गण्यम विविध रंगे आकाश गंगम सूर्य चंद्र तारा संध्या उषा कोई नानते. Thank you, sir. Good evening. I am a lotus. I am a national flower. My color is pink color. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. Thank you. है वतन मेरे वतन Good morning. My name is Sriyale. I am studying 4th standard section A. I am singing patriotic Tamil song. அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்ப இல்லையே இச்சகத்த ஓரம் எடுத்து நின்று போதினும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்ப இல்லையே துச்சமான எண்ணினம் தூர செய்ய போதினும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்ப இல்லையே பிச்சை வாங்கி உண்ணுவாக்கை பெற்றுவிட்ட போதினும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்ப இல்லையே இச்சை கொண்ட பொருள் எல்லாம் இழந்து வித்த போதினும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சவெம்ப இல்லையே பச்சையூனி ஐந்தவர் படைகள் வந்த போதினும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சவெம்ப இல்லையே உச்சி மீன் மாடி இடிந்து வீழிக்கின்ற போதினும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சவெம்ப இல்லையே. Thank you. I am truly honored to get this opportunity to speak on patriotism on this very day. A country like India with huge human resource, there's nothing that we cannot achieve as a country. What we need is to infuse the youth with the right form of patriotism. A patriotism is nothing but a love and a zeal to do something towards the countrymen.
I have always believed in the good of this great land and forever thankful to the ones that have sacrificed their life so that we could breathe independently. Great people like Mahatma Gandhi, Rajguru and Sukhdev, Sardar Vallabhbhai Patel, Subhash Chandra Bose, Sahib Bhagat Singh, Lala Lajpat Rai and many more saints struggled for this day. So we must honor their sacrifice and work every day towards making this country even more significant. Often we get to see the young generation speaking ill about the country and they don't appreciate the hardship, the struggle our forefathers went through. It's high time we recognize the sacrifice and focus our energy towards building this great nation of ours. Patriotism is not just sharing a post on your social media handle. It is instead of how we act towards the need of our fellow countrymen. It is the effort on the ground we put into making this country more exceptional in all possible aspects. Patriotism is loving our country and prove it time and principal, teachers, parents and dear friends. Today my speech is importance of education. Education. What is education? Education is all-round development of human being. Education is my best friend. Education become a doctor, lawyer, engineer, any such respectful position. Education helps us a right decision to take a life. The first purpose of getting good education is being good citizen. Last, they will say Mr. Nelson Mandela. Education is most powerful weapon which you can use to change the world. Thank you. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति सारो, होगी शांति सारो, होगी शांति सारो एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति सारो एक दिन। अब
चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, तो वो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, एक दिन, वो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज, एक दिन, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन, वो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, एक दिन। Good morning to the respected principals and teachers and all my dear friends. Today we are here to celebrate the Independence Day of our nation. This day is the most important day for all of us because on this day in 1947 we got independence from the British rule. Great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, and many others devoted their entry from the independence of our country. Their sacrifice can never be forgotten. Our independence is priceless. We must respect it. We must also respect the soldiers fight on border to protect our nation. At last, I would like to say that we are proud to be an Indian. Jai Hind, Jai Bharat.
my respected teachers, parents, and dear friends. Today we have gathered to celebrate this called national event as we all can that Independence Day is on all of you Indian, yes, Independence Day is the must day. Independence Day to all the Indian and has been national forever in the history. It is the day when years of hard by the God freedom Indian Independence Day 15 August to remember the first day of India as we has remember all the of the God leaders who have their life in getting freedom. Thank you, ma'am. Thank you, student. Good morning to all. I am Paunika, 4th A. Today is Independence Day. I am going to speak about Independence Day. August 15, 1947 is India's Day of Independence, and hence this day is celebrated as India's Independence Day in the form of a festival every year. The Prime Minister of India caused the national flag and used a speech to embark on the importance of the day, the bright future of the country, and every citizen love their nation. This day teaches us about the power of unity among Indians and how it can strengthen our nation. I love my India. Jai Hind. Bharat Mata ki Jai. Bharat Mata ki Jai. Bharat Mata ki Jai. Thank you. Hello everybody. I am Kavijit of 4th B. Today I am going to speak about APJ Abdul Kalam, President of India. The honor of being the 11th President of India went to APJ Abdul Kalam. This marked another tremendous feat in his already venerable career. This highly acclaimed personality became president after winning the 2002 presidential election by a massive margin. His legacy, saying that Indian people love APJ Abdul Kalam, would be a massive understatement. The Indian people have a huge affection for this man. Consequently, he was known as the people's president. The man had to face only a few critics his entire life. Thank you. Good morning, everybody. I am Danska, 4th B. I am going to tell about Mahatma Gandhi ji, father of our nation. Mahatma Gandhi had born in a Hindu family on 2nd October 1869 at Porbandar in Gujarat. He was the leader of the Indian independence movement against British rule. He inspired civil rights and freedom movements across the world. The title Mahatma has given to him in South Africa in 1914. The Indian government has declared 30 January as Mother's Day. Thank you. नमस्ते जी, मेरा नाम यालन है। हिंद देश के निवासी, हिंद देश के निवासी, सभी जान एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी, सभी जान एक है, रंग रूप वेश
जूही चंपा चमेली बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल उनके माला में की है प्यारे प्यारे फूल उनके माला में की है हिंद देश के निवासी सभी जान एक है रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है कोयल की कूक न्याई पपीहे की टेप्याई कोयल की कूक न्यारी पपीहे की टेप्यारी गा रही गाना बुलबुल राग मगर एक है गा रही गाना बुलबुल राग मगर एक है हिंद देश के निवासी सभी जान एक है रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है गंग जमुन ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी गंग जमुन ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है हिंद देश के निवासी सभी जान एक है रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है हिंद देश के निवासी सभी जान एक है रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है जय हिंद धन्यवाद जी I am you, Hasini, 4th B. Good morning to all respected principals, teachers and my dear friends. At first let my wishes you all a very happy Independence Day. Independence Day is the national festival of India. It is celebrated on 15th August every year. India became an independent country on 15th August 1947. It is celebrated because India get independence from British on this day. We should remember our great leaders like Mahatma Gandhi, Nehru, Subhash Chandra Bose and others. It is also declared as a national holiday. India flag gets a salute from everyone. Indian national anthem is also sung on this day. It is a very proud moment for the country. It is one of the greatest festival of democracy. Thank you. Good morning. I am Viswajit, 5th A. I am speech about Hindi in Independence Day. भारत के राष्ट्रीय त्योहारों में से एक है हमारा स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त का दिन हमारे भारतीय लोकतंत्र और भारतीयों के लिए बहुत खास दिन है। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के अत्याचार और गुलामी से हमें मुक्ति मिली। स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन के लिए राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। हमारे स्वतंत्रता सेनानी जैसे गांधी जी जिनका आजादी के लिए संघर्ष में अतुल्य योगदान रहा है। 15 अगस्त के दिन को लोग अपने अंदाज में मानते हैं। बड़े हौसला
15th August 1947 from British School. This year celebrating 75th Independence Day. I am proud to be an Indian. Thank you. Good evening, sir. Independence Day celebrated on August 15th. And that day we host our three color national flags. We distribute to all our 22 November, all the freedom fighters. My country. India. National language. Hindi. National anthem. Janaganamana. National song. Vande Mataram. National pad. Pika. National flower. Lotus. National fruits. Mango. National game. Hockey. National animal. Lion. Tiger. Tiger. Tiger பத்தி சொல்லு. Tiger is national animal. It has yellow and black streaks on its skin. It is live in the jungle. It looks at because. Thank you sir சொல்லு. Thank you, sir. My name is Subhatra. I study in Kendriya Vidyalaya. Now I will sing the national anthem. Janahana Mana Adinayaka Jaya He Bharat Bhagya Vitata Punjab Sindh Gujarat Mara Dravida Utkala Banga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Uchala Javasita Tranga Tava Shubha Name Jahe Tava Shubha Hashisha Mahe Tahe Tava Jaya Tata Janagana Mana Adinayaka Jaya He Bharat Bhagya Vidata Bharat Bhagya Vidata Jaya He Jaya He Jaya 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 He. Thank you. तलवारों पे सरवार दिए अंगारों में जिस्म जलाया है तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है।
ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।